ठीक है मैम, आप स्टार्ट कर दीजिए। ओ, और आप चाहे तो एक थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 11:48 हो गया, तो आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं क्लास। ओके। ठीक है मैम, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आवर थर्ड लेक्चर ऑन नेशन स्टेट, है ना। ये हमारा थर्ड लेक्चर है नेशन स्टेट के ऊपर। हम लोगों ने नेशन स्टेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर चुके हैं जो आज मैं नहीं उसको रिमाइंड कराऊंगी, बिकॉज इट्स टुक अराउंड 2 चैप्टर्स। हाँ, ये बिल्कुल 2 चैप्टर हम लोग पूरा अच्छी तरह से हम लोग देख चुके हैं। हाउ, what is the definition of nation state, what is the cultural political inputs in a nation state, how nation state evolved through Westphalian treaty, and what are the necessary characteristics of a nation state, and what are the issues this time evolving to understand types of nation state। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि किस तरह से किस प्रकार के राष्ट्र राज्य हो सकते हैं, कैसे जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कैपिटलिस्टिक नेशन स्टेट हो सकते हैं, कोई कोई कम्युनिस्ट स्टेट हो सकते हैं, और कभी कभी हम लोग बात करते हैं इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया है। हम लोगों ने रिलीजियस स्टेट क्या है और सेकुलर स्टेट क्या है, इसके बारे में भी बात किया है। और नेशन बिल्डिंग और स्टेट बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र राज्य या राष्ट्र की जो सोच है वो इवॉल्व जब होता है, एक ऐतिहासिक सेटअप होता है, एक कल्चरल सेटअप होता है, एक हिस्टोरिकल सेटअप होता है, उसके बारे में भी हम बात किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत, दैट इज भारत is union of states, and union of states, and we have seen and imagined our togetherness during British colonial phase। जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल फेज में ही हम ऐसे एक नैरेटिव की तैयारी किए, ऐसे एक सोच इवॉल्व किया कि हम ऐसे सारे राष्ट्र राज्य या छोटे छोटे राज्य मिलके एक फेडरल स्टेट की गठन करेंगे, है ना। तो ये जो है ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है। नेशन स्टेट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही विस्तृत है। इसके ऊपर तो आप 5, 10 या 15 क्लास भी पढ़ सकते हो। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन में कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव में हमें यहाँ पे नेशन स्टेट को देखना है। वहां पे हमें देखना है कुछ स्टेट क्यों कैपिटलिस्टिक स्टेट कहलाए जाते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है। कुछ स्टेट कम्युनिस्ट स्टेट क्यों कहलाए जाते हैं, कुछ इंडस्ट्रियलाइज स्टेट क्यों कहा जाते हैं, या व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज ए what I'll say, communist state, because we have studied China, we have studied bit of Russian time, USSR time in authoritarianism। हमने ये सब देखा है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी अथॉरिटेरियन कम्युनिस्टरिज्म भी देखा है, उसमें हमने टोटालिटारियनिज्म देखा है। ये भी एक प्रकार का नेशन स्टेट है। जैसे टोटालिटारियनिज्म के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, किस तरह से नाजीवाद एंड बेनिटो मुसोलिनी का फांसीवाद वो एक नेशन स्टेट को भी इंडिकेट करता है। और इसी के साथ हमने डिस्कस किया था कि वीक स्टेट कौन से हैं, है ना। वीक स्टेट कौन से हैं? वीक स्टेट आर दो स्टेट वेयर यू कैन फाइंड पॉवर्टी, डिजीज, लो लिविंग स्टैंडर्ड। ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस किए हैं कि पावरफुल नेशंस लाइक यूएसए क्यों, व्हाई दे आर पावरफुल, व्हाई दे आर कॉल्ड एज नेशन स्टेट हु कैन मैनेज देयर क्राइसिस। अभी अभी भारत सभी के पास जाके पैंडेमिक के टाइम में मांग रहा है, बट
hardly any state is other state which is, you can say, developed nation are asking for any help. they legitimately we have in problem. तो ऐसे भी होता है, कभी कभी पावरफुल नेशन भी क्राइसिस में आ जाते हैं, जैसे पैंडेमिक का सिचुएशन है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस सिचुएशन में वी आर नॉट रेडी एट ऑल. तो पावरफुल स्टेट कैन फोरसी द प्रॉब्लम, पावरफुल नेशन स्टेट कैन फोरसी द प्रॉब्लम. ये उनके साथ एक अच्छा चीज है, वो रिजर्व रखते हैं अपना. फॉर एग्जाम्पल, there will be a scarcity of energy, of oil energy, then reserves should be there, है ना. तो हमने फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा था, हमने बहुत सारे ऐसे चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट दो क्लास में, और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से स्पेसिफिकली वेस्टफेलियन ट्रीटी के साथ 1648 में एक वेस्टफेलिया का ट्रीटी लिखा गया, उसमें किस तरह से यूरोपीय सोच या विचार में या यूरोप के संदर्भ में राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति हुई. और राष्ट्र राज्य एक हाइपेन, एक बीच में एक हाइपेन होता है ना, नेशन एंड स्टेट. जैसे अभी मैं तुम्हें दिखा रही हूँ फर्स्ट स्लाइड में, मैं नेशन एंड स्टेट. पहले आपको नेशन बिल्डिंग करना होगा. नेशन बिल्डिंग इज ए साइकोलॉजिकल सेटअप. वो हिस्ट्री के ऊपर आधारित हो सकता है, आपके एथनिसिटी के ऊपर, नस्ल के ऊपर आधारित हो सकता है. ये नेशन बिल्डिंग पहले खत्म हो जाएगा, देन यू विल थिंक अबाउट ए पॉलिटिकल सेटअप, and that political setup will lead to a administrative setup. अपना पुलिस होगा, अपना फ्लैग होगा, अपना एंथेम होगा, आपका अपना टेरिटरी डिफाइंड होगा, आपका अपना मैप होगा, आपका अपना आर्मी होगा. दिस टाइप ऑफ थिंकिंग वुड बी देयर. तो ये सारी चीजों के ऊपर हमने बात किया था, और उसके साथ हमने बात किया था कि स्टेट्स आर now in difficult situation, in a situation when implementation is concerned. जब स्टेट की कोई काम की बात आती है, स्टेट को कुछ देने की बात आती है, तो स्टेट्स आर वेरी वेल आर द प्राइमरी एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन. अब देखिए, चाहे यूएन कितना भी कर ले, डब्ल्यूएचओ कितना भी कर ले, यूनेस्को कितना भी कर ले, लेकिन भारत एज ए स्टेट, भारत का अपना एडमिनिस्ट्रेशन को आके काम करना पड़ेगा इन ए क्राइसिस सिचुएशन, इन ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. बट इन नॉर्मल सिचुएशन people justify that in a globalized world order. आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे होगे, ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड ऑर्डर में स्टेट आर actors, but they are not prominent actors. They are part and parcel of working of international relation, but they are not the prominent actor और prime actor, है ना. ये सिर्फ ये राष्ट्र राज्य नहीं है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यूरोपियन यूनियन है, या आप बोल सकते हो नाटो है, या आप बोल सकते हो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो इंटरकनेक्टेड है ना. तो ये एक बहुत ग्लोबलिस्ट व्यू पॉइंट है, जहां पे आपको बोला जा रहा है बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन के तरह नेशन स्टेट्स आर also part and parcel of the international politics और global politics है. ये हम अभी तक, ये हमारा रिकैप था, ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, और उसमें हम और एक चीज पढ़े हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है, some nations are existing but they are demanding for their statehood and they are not receiving it, they are not being recognized by. जैसे पैलेस्टाइनियन मूवमेंट के बारे में बताया था आपको, मैंने कुर्दिस्तान के बारे में बताया था आपको. they are the nations without state, है ना. एंड इंडिया को बहुत समय में बोला जाता है स्टेट एंड नेशन इन मेकिंग.
नेशन इन मेकिंग मतलब हमारे अंदर जो भाईचारा, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा धुंधला है। तो यहाँ पे आपको रीजनल इश्यूज आ जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे स्वायत्तता डिमांड करने वाले छोटे छोटे मूवमेंट्स के बारे में आपको दर्शाया जाएगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे खालिस्तान मूवमेंट में भी, मे बी नागालिम मूवमेंट ऑफ नागाज, ग्रेटर नागा, उसके बारे में भी हमने बात किया था। और उसके साथ हमने बात किया था शायद तमिल सूबा के बारे में। तमिलियन पीपल, दे वांटेड टू क्रिएट ए तमिल सूबा और तमिल स्टेट। दैट्स टाइप ऑफ थिंकिंग sometime can be solved. This type of problems in the front of nation state, these are the challenges. This can be solved through creating different constitutional mechanism. जैसे इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम किस प्रकार से उसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे भारत का इशू आया था बीच में, नागालिम का इशू आया था, या तमिल सूबा का इशू आया था, वहां पे तेलंगाना का इशू आया था, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का इशू झारखंड बनाने के लिए आया था। तो हमने इस चीज को सॉल्व किस मैकेनिज्म से किया? फेडरलिज्म के थ्रू किया। Federalism became a form of government where it has accommodated many aspiration of nation state. Many aspiration, बहुत ज्यादा जो उम्मीद है कि हम अपना राज्य बनाएंगे, हम अपना ये करेंगे, हमें स्वायत्तता की जरूरत है, हम अपना स्वशासन करेंगे। जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है क्लॉज जो है, जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में मैंने पढ़ाया था आपको, पोस्ट कॉलोनियल थिंकिंग में होता है। तो ये सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं यदि हम एक फेडरल सेटअप की सेटअप तैयार करते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस। इसी के साथ साथ आज मैं जो छोटा सा प्रेजेंटेशन तुम्हारे सामने देने जा रही हूँ, वो है वेरी कंटेस्टेड इश्यूज ऑफ नेशन, नेशनैलिटी एंड नेशनैलिटी। नेशन, नेशनलिज्म एंड नेशनैलिटी, ये तीन शब्द में अंतर है। ठीक है, ये जो अंतर है, ये जो है, ये मेरे बोलने का चीज नहीं, ये तुम्हारे सिलेबस में एक रीडिंग है, उसी में दिया गया है। What it says that nation state is a contested issue and it can certainly change its form फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे अभी देखिए, अभी भारत बिल्कुल यूनाइटेड है टू स्ट्रगल अगेंस्ट द एपिडेमिक, है ना। भारत बिल्कुल यूनाइटेड है कि ये जो एपिडेमिक आ रहा है हमें खत्म करना है। But was the time there when Tamilians were demanding Tamil Suba, Sikhs are struggling to make Khalistan, and Nagas were fighting for their Nagaism? There are certain other examples in the world. Quebec is trying to break away from Canada. Scottish Nationalist Party, जो मैंने पार्टी सिस्टम में आपको पढ़ाया था कि ब्रिटेन इज नो मोर ए बाई पार्टी सिस्टम, टू बिल्ड ए इंडिपेंडेंट नेशन आउट ऑफ यूके। प्लेड काइमूर के बारे में मैंने पार्टी सिस्टम में आपको पढ़ाया था। प्लेड काइमूर डिमांड सेपरेट वेल्स का स्टेट एंड डिफेंड वालिस कल्चर एंड वालिस लैंग्वेज। तो ये जो है, what I want to say that this nation itself is a very contested issue. It is united one time, it separates certain other time, है ना। Nationalism in that way talks about a defining feature of national consciousness. तुम्हारे अंदर एक consciousness होगा, is not mere a sentiment of loyalty. जैसे तुम भारतीय हो, तुम्हारे अंदर एक राष्ट्रीय चेतना होना चाहिए। that is not merely that you are loyal to the nation, but in your mind there is an aspiration. वो तुम्हारे अंदर एक चाहत है। क्या चाहत है? एक सेल्फ गवर्नमेंट की। जैसे भारत जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट लड़ रहा था, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर राष्ट्रीय चेतना पहले से नहीं था। राष्ट्रीय चेतना, जो नेशनल कॉन्शियसनेस जो था, जो सेंटिमेंट ऑफ लॉयलिटी था, हमने बारी बारी दिखाया था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत ही ज्यादा
exploit किया, we came together, we unified our power and unified our power to क्रिएट आवर सेल्फ गवर्नमेंट, स्व शासन की गठन या इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता की हमने मांग की. इन इफेक्ट ए नेशन डिफाइंस इटसेल्फ बाय इट्स क्वेस्ट मतलब इच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है फॉर इंडिपेंडेंट स्टेटहुड. हम ऐसे नेशन को नहीं देख सकते. दिस इज व्हाई ऑलवेज देयर इज ए नेशन हाइफन स्टेट एंड यू रिक्वायर सम टाइम टू स्ट्रेंथन दैट नेशनल कॉन्शियसनेस इन योर माइंड, है ना. तुम्हारे अंदर दिल और दिमाग में जो कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ावा देना है. सिर्फ आप लॉयलिटी आप नहीं टैक्स देके या किसी का लॉयल होके नहीं दिखा सकते. यू हैव टू स्ट्रेंथन दैट लॉयलिटी, यू हैव टू यूनिफाई एंड कलेक्टिवाइज ए ग्रुप ऑफ पीपल अलोंग विथ यू टू रीडिफाइन ए बाउंड्री. एक आप उसके बाद तय करते हो कि हमारा बाउंड्री क्या होगा. यदि तुम्हारे अंदर एक साइकोलॉजिकल फीलिंग नहीं होगा, मेरे बोलने का मतलब है, दिस राइटर इज एर्नेस्ट गेलनर. एर्नेस्ट गेलनर, ही रोट ए बुक कॉल्ड नेशन एंड नेशनलिज्म इन 1983. उसमें से एक पैराग्राफ तुम्हारा जो रीडिंग मटेरियल है उसी में से मैंने पिक किया है. इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना. देन हाउ this things are being originated, it is I know it is a very complex issue. I know it is difficult to write down in a page, but when you think about the origin of the idea of a nation, you can trace the origin from your history, from your culture. तुम्हारे इतिहास में, तुम्हारे संस्कृति में, तुम्हारे जातीयता के अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं नेशन स्टेट बोल के कुछ हुआ होगा. जैसे व्हाई गांधी इज बीइंग कॉल्ड एज अ फादर ऑफ द नेशन, दैट फादर ऑफ द नेशन क्रिएटेड ए फैमिलीहुड विद इन अस, क्रिएटेड दैट वी पीपल Indian of any religion, any language can be called as Indian because we fought a war against the Britisher. This cultural heritageal feeling itself says that create the idea of nationalism. There is another book you can say in the ethnic origins of nations, एक किताब लिखे एंथोनी स्मिथ ने. he stressed the extent to which मॉडर्न नेशन, जो मॉडर्न नेशन है, आज की जो नेशन स्टेट है, emerged by drawing upon the symbolism and mythology of pre-modern ethnic communities which he called ethnies. जाति, जातीयता, एक ऐसा नस्ल. जैसे भारत, हिंदुस्तान क्यों है? हिंदू जो हिंदू कुश पर्वत देके यहाँ पे आर्यन आए थे, उन्हीं को आप हिंदू बोलते हो, हिंदुस्तान बोलते हो. हिंदू या सिंधु रिवर के आसपास रहने वाले सारे लोग, उसी को आप नेशन बोलते हो. You historically construct that narrative of common cultural heritage, that जो साधारण समान ऐसे संस्कृति की सोच विचार आपने किया है, एंड यू ट्राई टू predate the achievement of statehood. You try to establish a state in that way. वो हम ब्रिटिशर के साथ किए और we united ourselves as modern India, and that Indian nation you can existed before but divided into different princely states, है ना. छोटे छोटे princely state जो 556 के करीब princely state मिलके एक भारत जब तैयार किए, हमने एक राष्ट्र राज्य की गठन, राज्य की गठन करने की कोशिश की. and we linked this to emergence of doctrine of पॉपुलर सॉवरेंटी. पॉपुलर सॉवरेंटी मतलब जो सॉवरेंटी है, सार्वभौमिक चीज है, वो लोगों के हाथ में है. लोगों ने तय किया कि भारत एक ऐसे संघीय राष्ट्र व्यवस्था होगा जहां पे भारतीय ही रहेंगे और भारतीय अपने नेशनल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेंगे. एंड भारत इन दैट वे, इंडिया वुड बी considered as multicultural state.
linguistic thing, multi-religious state. We will be discussing regarding this. तो ये आप देख लीजिए. एंड कभी कभी ये होता है कि we certainly discuss about our national identity. हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी जो आइडेंटिटी है. दिस इज व्हाई नेशनल आइडेंटिटी सो ऑफन एक्सप्रेस इन ट्रेडिशंस. हमारी ट्रेडिशन है बड़ों का पैर छू के प्रणाम करना. हमारा कस्टम है, हमारा कस्टम है श्री राम या अल्लाह या जो भी है, दैट कस्टम्स रिलेटेड टू आवर एवरीडे लाइफ. वी हैव कस्टम ऑफ मेनी थिंग्स. पास्ट जनरेशन से चलता आ रहा है, ये हमारा कस्टम है कि बड़ों को हम सम्मान करते हैं. और जो 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 वसुधैवम कुटुंबकम में भी यू जस्ट लव योर गेस्ट. हाँ, आप अपने गेस्ट को, अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं. दिस आर द कस्टम्स, दिस आर द ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग योर सीनियर्स, रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, praying, maybe having prayers in all through this religious belief. सिर्फ हिंदू ट्रेडिशन में नहीं है, मोहम्मदान में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी प्रेयर है. You connect it certainly to certain generations कि ये करते आ रहे हैं. तो इसी तरह से as clearly occur in the case of Greeks. ग्रीक का अपना नगर राज्य होता था, ग्रीक नगर राज्य में अपना उनका कैरेक्टर होता था, डेमोक्रेसी होता था, एजुकेशन होता था, पैट्रियार्किकल सेटअप होता था. Germans have their own culture. They were connecting to the Aryan, what I'll say, race, है ना. The Russian have their own Christianity, Slavic Russian Christianity. The English have their own cultural setup. The Irish have their own cultural setup. तो ये उनका राष्ट्रीय पहचान है. English people speak in certain way. Their language is not specifically connected to American English. They have their own Oxford English, maybe. है ना? From this perspective, nation can be regarded as organic. जीवंत, वो जीवंत है, उसी कल्चर में, उसी ट्रेडिशन में जीवंत है. ठीक है. Nation is something you can say it's really organic, that they have been fashioned by natural and historical factors rather than political one. ये political one होने से पहले historical and natural setup में ये imbibe हुए थे, ये पले बढ़े थे. This, for example, your love toward your national language maybe. अब हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है, इसका क्या मतलब है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया were reading and writing that देवनागरी लैंग्वेज, है ना, before we decided that Hindi is our national language constitutionally. इससे पहले हम पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि ये पहले होता था. फॉर एग्जाम्पल, the custom and tradition shown in Ramayana, maybe India's nationalhood या national identity को यदि आप जानना चाहते हो, that Ramayana is not confined specifically to the north Ayodhya and all that. It is spreaded all through India in south and north, both south and north. ठीक है. तो ये रामायण की जो परिभाषा है या रामायण का जो चित्रण है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ में नहीं है या ईस्ट में नहीं है. Everywhere that is there, but in different form. This can connect it to your tradition and custom of majority, and this may in turn mean cultural nations are stable and cohesive. We try to now bind together as a Hindu nation, and we are trying to bring both northeast, south all together. And we are trying to create a national unity and integrity.
है ना, हम कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हम बहुत सारे ऐसे कस्टम्स को, जैसे पद यात्रा कर रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हम दिखाना चाहते हैं, दिस इज आवर नेशनल आइडेंटिटी। Why we are calling all the diplomats and taking them to a room round, maybe all the cultural places. कोई आगरा जाता है, कोई महाबलीपुरम मंदिर जाता है, डिप्लोमेट्स जब आते हैं, बिकॉज ऑफ दैट we want to identify or connect them to the setup of multiculturalism. It is not bad. We imbibed it. We imbibed it in our constitution with all our sense. ऐसा नहीं कि किसी बड़ों ने बोल दिया तो हमने कर लिया, ऐसा नहीं है. We imbibe it as our own tradition. लोग, people are really get astonished how India is living as such a multi-diverse country, such a big country. If you look at geography, आप geography को देख लीजिए. आप यदि यूरोप देखेंगे, छोटे छोटे से राज्य, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके itself, they are small little nations, but they are developed. They have inculcated the idea of science in them. So आगे बढ़ रहे हैं. Then you come to the multicultural identity. What is called, you can say, melting pot concept. ये भी आएगा जब आप पढ़ रहे होगे कभी नेशनलिज्म के ऊपर, ये भी आएगा. The melting pot is an monoculture and metaphor. ये एक सोच है, ये एक narrative है, metaphor है. For a heterogeneous society becoming more homogeneous and the different element of melting together. आप melting pot, जैसे आप कभी खिचड़ी बनाते हो ना, या आप कोई भरता बनाते हो, melting pot. You pour everything in it, and in the end they lose all their essence and they create a dish for you, है ना. आप खुद बनाते हो, because खिचड़ी is a traditional recipe in India, and it has all very basic elements and different elements, but it ends off with one essence, है ना. उसी तरह से you have different elements. For example, salad bowl में भी, एक बाउल में सैलड है, आपने खीरा काटा, आपने टमाटर काटा, आपने ओनियन काटा, you put nuts in them, you put oil in them, सरसों का तेल मिलाया, you put garlic in them, you melted together and created a dish. Likewise, American culture को बोला जाता है is a melting pot. अमेरिका में सिर्फ अमेरिकन नहीं है, माया सभ्यता के लोग नहीं है, यहाँ पे फॉरेन एलिमेंट्स भी हैं. यूरोप से लोग आए, हिस्पैनियंस गए, एशियन लोग गए, कैनेडियन लोग गए, and they have decided that this foreign element who's having a different cultural background can possess a citizenship. It's a modern thinking. कोई बात नहीं, इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप कि आप जब सिविलाइज्ड होगे, आप जब एक पॉलिटिकल स्टेट बनाओगे, इन सारे डिफरेंट माइग्रेंट को रिकॉग्नाइज करोगे कॉन्स्टिट्यूशनली इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एंड that you will negate in that way the potentially disharmony existed in previous culture. जो disharmony दिख रहा था, ब्रिटिशर अलग हैं, माया सभ्यता के लोग अलग हैं, या अबोरिजिन्स लिविंग इन अमेरिका अलग हैं, या रेड इंडियंस अलग हैं, एशियन इंडियंस, चाइनीज हिस्पानियंस, कैनेडियन. there are group of people who possess citizenship right now, and they depicted that they are heterogeneous but they can live together as a political community. समझ में आ रहा है?
that is you can say multicultural identity. India can be of that kind. मैं उड़िया हूं, आप बंगाली हैं या और कोई मध्य प्रदेश में रहता है, खान पीन हमारा लगभग अलग है, लेकिन we made a integrational thinking behind it कि we'll make culturally integrate into a one India. That is a melting pot या मेटाफोर है. ठीक है, अब आ जाते हैं some nationalist people who went into the extreme है, वो nationalist people जो बहुत ही आपको मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गए थे. आपको पता है मैंने 1945 की पहले की जब बात करते हैं, 1945 के पहले, तब नेशनलिज्म कैन ग्रो इनटू ए एक्सट्रीम ऑफ इट्स काइंड. जब वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, देयर एस्पिरेशन ग्रो हायर, दे ट्राई टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी. टेरिटरी उसका बेसिक कैरेक्टर है ना नेशन स्टेट का, तो टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं. They try to interfere in territorial sovereignty of other nation. They try to capture people of different states. कभी कभी extremist state nation states go for war. They declare war. They fight. Maybe Mussolini is Italy during fascist time 1932 and 40 onward 45. Nazism Nazism in the leadership of Hitler. मैंने आपको totalitarianism पढ़ाया था, उसमें ये पढ़ाया था. The idea comes from total identification of individual with the state. अब आपको प्रजा बन जाना है, अब आपको पूरी तरह से आपकी राष्ट्र के लिए आपको निछावर करना है, आपको दे देना है. You have to lose your identity to redefine the extreme nationalism. आप कौन हो भूल जाओ, आपका फ्रीडम क्या है भूल जाओ, आप क्या कमाते हो वो भूल जाओ. That idea comes from total identification of individual with the state. The major objective is to strengthen mass devotion. आपको डिवोशनल होना पड़ेगा, आप सब भूल जाइए. Here nation at concept as idea is an extension of self. आप एक एग्जाम्पल है जो आपके रीडिंग में है, उसमें आपको एक एग्जाम्पल हिटलर ने दिया है. जब उन्होंने अपने मेन कैंप में लिखा है, मेन कैंप उनका किताब है, उसमें लिखा है आर्यंस they are trying to redefine their nationalism by strengthening the idea of race. Nazi's race, that race is German race, that is Aryan race, है ना. तो idea comes from total identification. Japanese nationalism, Tozo in Japan maybe, है ना. These are called extreme nationalism. And what your debate right now is you can say nationalism now is being considered as loyalty to your state. You have to give your tax, you have to be listening to the order of the government, you have to be very loyal to it, and your intention should be clear. Otherwise you will be considered as anti-national, है ना. And in there, that nationalism says that you are not only loyal to the state, but you should feel proud in your heritage, in your culture, in your tradition. And you became proud with your national flag, anthem. You cannot disrespect that. And you will be
creating your identity, you will identify your national currency, national food, maybe national animal, national plant, national culture, tradition, and you'll find the uniqueness in it कि ये भारतीयता है. For example, our identification with yoga, you say it is an ancient cultural aspect of India. Maybe our relation with Ayurveda, you connect it, and our relation with living with harmony. You can say our foreign policy related to non-violence. हम किसी को offensive way में नहीं देखते. We see the uniqueness of India. That is our nationalism. Though that can be that is being defined from a territorial setup कि जम्मू से what is that place कन्याकुमारी, यहाँ से कच्छ से यहाँ तक eastern part of India. The terrain or geography of one country, हम एक country हैं, we count as one, है ना. तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि वेस्टफेलिया से ये शुरू हुआ, और जब हम मॉडर्न नहीं थे, जब हम ट्रेडिशनल सेटअप ऑफ नेशन स्टेट में रहते थे, तो गुप्ता एज था, कोई मौर्यन एज था, प्रिंसली स्टेट था, छोटे छोटे से नगर राज्य थे, तो वो समय अलग था. We had not created such imagination that we live as a community, है ना. Then there was a common consciousness evolved during British rule. सारे लोगों को अत्याचार किया, हमें एक्सप्लॉइट किया, बड़ा हमारा पैसा ले लिया, लूट लिया. And that consciousness, that spirit कि ये हमारा एक ही एनिमी है, that identity make us a collective entity. एक सामूहिक एंटिटी बना, है ना. एक छोटा सा सामूहिक एंटिटी बना. कॉमन कॉन्शियसनेस जो था, वो आइडेंटिटी मेड अस ए कलेक्टिव एंटिटी, दैट इज भारतीय, वी इंडियंस, है ना. द स्टेट इन दैट वे इज सॉवरेन. नाउ हाँ, किसी ने पूछा था कॉमनवेल्थ नेशन के मीनिंग क्या है. अभी भी कॉमनवेल्थ नेशन बहुत सारे हैं, आप गूगल सर्च कीजिएगा. जैसे नेदरलैंड है, सॉरी नेदरलैंड बोल रही हूँ, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है. दे कंसिडर्ड ब्रिटिश मोनार्की एज देयर head of the state, but in India president is the head of the state. We are sovereign. The highest power is enshrined in president, is to be chosen by you and me and we the people of India. It holds the highest power and in principle, and we can, that sovereign power which you can visualize in government can have complete freedom over certain territory. भारत में हम और किसी के इशारों से नहीं नाचेंगे. We have our own government. Whether we are doing wrong or whether we are doing right, we are independent to rule inside our territory. Though we are being influenced by, आप IR में पढ़ रहे होंगे कि we are influenced by global hegemons. हाँ, ग्लोबल हेजिमोन्स पढ़ रहे होंगे, जो बड़े राष्ट्र हैं, बचस है जिनका, वो आके हमें नचाने की कोशिश करते हैं. लेकिन we try to imbibe our strength and we wanted to showcase our independence. That is also can be related to your nationalism. Then is the power of sovereignty, which I had discussed many times, internal external sovereignty and internal sovereignty में कि आपको बहुत सारे welfare measures देने हैं, बहुत सारे चीज देश को करने होते हैं.
But here, the idea evolved in the discussion of United Nations in 2005. Ki every state has a responsibility to protect its citizen. From what? From genocide, narsahar, war crimes, ethnic cleansing, crime against humanity. ये responsibility to protect lead to understanding that the state has to protect its people from this type of problems. Just a second. It's very well mentioned in your readings. Uh, this has been came after 1945 maybe. The genocide and war crime and ethnic cleansing and crime against humanity. You may have heard about Balkan. Huh? You may be heard about Iraq and Kuwait war. Maybe you may be heard about Afghanistan war. War crimes are growing up. Ethnic cleansing happened after Yugoslavia broken up. ये क्राइसिस है. ये सारे क्राइसिस से देश को बचाना है, लोगों को बचाना है. दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इज गिवन टू द स्टेट्स. यदि ये स्टेट नहीं कर पाएंगे, देन द सिक्योरिटी काउंसिल विल टेक ओवर. शायद इसीलिए बार बार अमेरिका हस्तक्षेप करता है बहुत समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कुछ एथनिक क्राइसिस चल रहा है, कुछ क्राइम्स हो रहा है, रेप्स, मर्डर एंड ग्रुप किलिंग. So definitely there is a responsibility of the state is to take and protect its own citizen. Citizenship, and let us discuss about what I'll say theoretical approach to origin of state. This is also in your reading and it is a compilation of your reading today's lecture. You will interconnect the three PPTs are being given, and the constitutional, there are theoretical approach. How you look at origin of state. किस तरह से राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट या राज्य की उत्पत्ति हुई. कौन बनाया राष्ट्र राज्य को? We the people of India. In India, we the people of India agreed together. है ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट बनाया, ब्रिटिश को भगाया, हमारे अंदर नेशन बिल्डिंग किया, हमने एक नेशन बिल्डिंग, एक समानता, यूनिक एक सेटअप, मल्टीकल्चरल सेटअप बनाया. वी मेड आवर एग्रीमेंट बिटवीन ऑल ऑफ अस and our ruler, the then government, or you can say constitutional assembly, that will be democratic nation, will be secular nation, will be secular democratic sovereign nation. And many states evolved like this. That USA, maybe many states agreement ki. All the Eastern European new communist, post-communist state, all the Asia, Africa, Latin America, ke all the state who are being created after decolonialization, they agreed together. They brought a constitutional mechanism to create their state. उन्होंने अपने नेशन स्टेट को बनाया. उनके नेशन स्टेट की उत्पत्ति इस तरह से हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से हुआ है. कोई लड़ाई झगड़ा किसी के अंदर नहीं हुआ है. They came together, they negotiated, they have decided, है ना. And likewise, you can say, just a second.
was there in, yes. This approach says the social contract theorists knew they well that there is never an actual contract of kind. एक social contract हमने बनाया, एक agreement, एक संधि, एक चुक्ति, एक राजीनामा, contract, constitutional contract, and we created that our state would be like this, एक democratic, socialistic, sovereign, secular state होगा. We made it. Likewise, there is another ethical and moral approach. That ethical and moral approach say how we can organize society so that individual can live together very peacefully and satisfactorily as possible. जैसे आपने जैसे आप नेक्स्ट ईयर जाके अरिस्टोटल पढ़ोगे या प्लाटो पढ़ोगे, अरिस्टोटल स्पेसिफिकली, वो बोलते थे कि नगर राज्य ऐसा एक चीज है जहां पे व्यक्ति अपना सबसे अच्छा विकास ढूंढ सकता है, where citizen or human being will get their best of perfect life. तो हमने अपनी वेलफेयर के लिए ethically, morally, we created a community and tried to live with each other. आप इसमें सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी में आप देखिएगा किस तरह से लॉक बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जॉन लॉक बोलते हैं कि हम पीसफुली रहेंगे, हम वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल विल थिंक, कलेक्टिव एंटिटी, ये हमारा कलेक्टिव विश है, सार्वजनिक एक सोच और विचार है. एंड जैसे आप बोलते हो ना, भगवान दुनिया में एक ही, गॉड, रूल ऑफ गॉड ऑन अर्थ, or else ensure that state conducts its affair according to the God's intention and rules. जैसे कोई रिलीजियस स्टेट होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे शरियत का ही लॉ चलेगा, यहाँ पे हमारा हिंदू का ही लॉ चलेगा. उसी तरह से यू मैनेज योर अफेयर्स बिकॉज यू वांट वेलफेयर ऑफ ऑल. समझ में आ रहा है? दैट इज ए मोरल बाइंडिंग, मानविकता या मोरालिटी. ठीक है. Then if you look at creation या origin of state from conflict approach, you can find that capitalism and state building were closely connected. आप लास्ट सेमेस्टर में ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म पढ़े थे. यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अप्रोच से यदि आप ओरिजिन ऑफ नेशन स्टेट को ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको मिलेगा कि यहाँ पे क्लास कन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे वर्ग के ऊपर एक दूसरे वर्ग की लड़ाई होता है. जैसे हमारे यदि वर्ल्ड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म को देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कॉलोनियल जो पावर है वो हमें कॉलोनीज की तरह इस्तेमाल करते हैं. we are a class, undeveloped nations who are being ruled by those colonies. That is a conflict approach. Then we fought our independence of war and we found our nationhood. This is the approach of origin of the state. Then you can say that there is an approach called pluralistic approach. एक दृष्टिकोण है. यदि प्लूरलिस्टिक दृष्टिकोण से देखोगे आपको दिखने के लिए मिलेगा कि नगर राज्य या राष्ट्र राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, as a main organ, it had tried to reconcile the interest, try to regulate the conflict exist in the society and reconcile competing interest. हमारा जो हित है, आपका हित, आप एज ए स्टूडेंट का हित, मेरे जैसे टीचर का हित, या पर्सन हु इज मैनेजिंग द इंटरनेट,
all of are different, but interest of all of us are treated, should be treated reasonably. तो हमने लॉजिक लगाया और हमने एक राष्ट्र राज्य बनाया कि सारे लोगों का जो हित है वो किस तरह से एक दूसरे से लड़ाई ना करें, एक दूसरे से खाली लड़ाई ना करें, दे विल कम टुगेदर एंड क्रिएट ए फोर्स और अथॉरिटी इन द स्टेट, है ना. एंड द स्टेट विल नॉट बी अ बैटल ग्राउंड of competing interest, but it will a instrument, it will be an instrument of authority to solve the problem of various interest groups, है ना. तो these are the you can say these are the approaches how we can look at the development of modern nation state. किस तरह से मॉडर्न नेशन स्टेट या मॉडर्न राष्ट्र राज्य या जो जो का उत्पत्ति हुआ है, आप यदि देखने के लिए कोशिश करोगे वहां पे 4 डिफरेंट नोशन है. एंड स्टेट आर यू कैन से कैरेक्टराइज्ड बाय टेरिटरी, पीपल एंड सॉवरेनिटी, एंड स्टेट आर बेस्ड अपॉन द पावर ऑफ आर्मीज. आप स्टेट को किस तरह से देख सकते हो, स्टेट के पास अपना आर्मी होता है, अपना पुलिस होता है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एंड स्टेट के पास विजिबल एक गवर्नमेंट होता है. जहां पे गवर्नमेंट लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस में सफर करता है वहां पे गवर्नमेंट में बदलाव आ जाता है, कभी आर्मी टेक ओवर कर लेता है. आपने ब्राजीलियन गवर्नमेंट के बारे में 1988 से पहले, या मुशर्रफ का गवर्नमेंट इन पाकिस्तान में भी, या याहिया खान गवर्नमेंट, उस समय में यदि लेजिटिमेसी नहीं होगा तो क्या होगा, एक शासन व्यवस्था जो होता है दूसरे के हाथ में चला जाता है या जोर जबरदस्ती कोई छीन लेता है. एंड globalization as a phase has claimed and caused that there will be a decline of power in the state because the interdependency, जो पहले हम सोचते थे कि हम आत्मनिर्भर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता. we cannot be all equipped self reliant. हमें रॉ मटेरियल भी दूसरे से चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हम और कुछ देंगे, हम और किसी को देंगे, लेकिन हमें भी कुछ चाहिए. जो तो इंटरडिपेंडेंसी जो बढ़ गया है, that says that there will be decline of power of the state, but when there will be crisis the power of state increases. For example, मैं जब फेडरलिज्म पढ़ा रही थी उसमें आपको बताया था जब टेररिस्ट अटैक अमेरिका में हुआ, द अमेरिकन नेशनल गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स पावर. उसी तरह से जब क्राइसिस होता है स्टेट का पावर बढ़ जाता है. ठीक है. Thank you all of you for joining the class. I think it is enough for today. You just rewind the thing and just read out whatever material you have. You need not to worry about. And I think मैं जितना इंफॉर्मेशन आपको दी हूँ वो पूरी तरह से आपको इक्विप करते हैं. आप अपना छोटा सा एक पतला सा नोटबुक बनाइए और उसमें बस पॉइंट को लिखिए. जब एग्जाम होगा आप उसी एग्जाम या अभी से पॉइंट बना के रखिए, बिकॉज ओबीयू विल हैपन एंड नीड नॉट टू वरी अबाउट. आप अभी से लिख के थोड़ा थोड़ा रखिए. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. We'll have our next class on what is that topic? I am forgetting about it.
The topic would be, I think, gendering comparative politics. Huh? Gendering comparative politics. It will be again very interesting for all the people to understand what is gender and what is other things related to it. Okay. Thank you, all of you.